you don't need 10,000 things in life, right? 99.99% things that you see around, that people are doing, people are saying, people have been talking about, are not true. Economy drive mode activated. My name is Roman J, and I'm a marketing consultant. So right now I'm working independently. I do all of those things that everybody else is doing in the marketing sector. Yeah. Like I consult people on their social media marketing, content creation, Instagram strategies, YouTube strategies that have helped brands in scaling. धीरे धीरे उस चीज़ के बारे में बात करेंगे, मैं करता क्या हूँ, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया, ठीक है. But the whole point of this video is I really want to put emphasis on the things which are related to how you can lead a simple lifestyle. Simplicity की अगर मैं बात करूँ, earlier like when you were children, grandparents used to say, सादा जीवन व्यतीत करो, ठीक है, मतलब जिसमें most of the aspects you would have like seen back then, क्योंकि उनकी लाइफ में ना वैसे ज़्यादा कुछ था नहीं. दे यूज टू लाइक डू एग्रीकल्चर एंड उसके बाद मतलब वो जैसे जैसे करके उन्होंने सर्वाइवल वाज वेरी इंपॉर्टेंट. जो लोग थोड़ा सा हिस्ट्री से वाकिफ़ हैं उनको पता होगा कि यार उन लोगों ने एक्चुअली में कितना मुश्किल से सर्वाइव किया है. एंड द काइंड ऑफ प्रिविलेजेस दैट वी हैव टुडे, द लाइफस्टाइल्स वी लीड, वो सिर्फ उन्हीं की वजह से है. अगर वो उस टाइम पे मेहनत नहीं करते और यहाँ तक नहीं पहुँचते तो आप लोग कभी भी उन चीज़ों का फ़ायदा नहीं उठा सकते थे जो आज आप उठा रहे हो. वेरी सिंपल. सो इतनी सारी चीज़ों की ऑब्वियसली हमें ज़रूरत नहीं है यार. यू डोंट नीड 10,000 थिंग्स इन लाइफ, राइट? 99.99% things that you see around, that people are doing, people are saying, people have been talking about, are not true. People are just getting into perception pitfalls. Later on, like we'll talk about these things in this video. That is the point, like how to be mindful, perception pitfalls में मतलब कहीं जाना, ये सारी चीज़ें हैं. And yeah, this is my first video on YouTube, so I did not find anything to talk about. I wanted to talk about simplicity. और अभी टाइम है जिम जाने का भाई, ठीक है. सो पहले जिम जाएंगे. आज बाइसेप्स डे है, बाइसेप्स करेंगे आज, ठीक है. आई बिन कंसिस्टेंट टू द जिम 3 महीने से मैं कंसिस्टेंटली जिम जा रहा हूँ. बिफोर कोविड आई यूज्ड टू लुक लाइक दिस, एंड राइट नाउ आई एम 20 kgs up. After COVID, I lost all my physique, personality had changed, a lot of things had happened, and it's just not COVID, it's just a lot of things. पहले जिम, और जिम में बात करेंगे, बाकी इन चीज़ों के बारे में जिम में बात करेंगे. All right, see you guys in the gym. Finally, we are here at the gym, and today I'm doing biceps. We'll do 5 to 6 exercises of biceps. After that, I've got a meeting. मीटिंग के बाद देखते हैं फिर मतलब हम और क्या कर सकते हैं. यही सबसे शांत एरिया है जिम में इस टाइम पे, जहाँ पर मैं एक्चुअली कुछ भी बात कर सकते हैं और कुछ भी शूट कर सकता हूँ. माइंडफुलनेस का एक सीधा सा सिंपल सा मुद्दा है, वो ये कि आपको माइंडफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल दैट आर अराउंड अस, दे आर जस्ट एग्जिस्टिंग, दे आर नॉट लिविंग. इफ दे स्टार्ट लिविंग, दैट मीन्स दे आर बीइंग माइंडफुल.
मतलब आई हैव ऑब्जर्व दिस थिंग दैट पीपल आर नॉट बीइंग माइंडफुल। अभी जैसे वर्कआउट करते करते भी मेरे को कितनी सारी चीज़ें ये रियलाइज़ हुई है कि जो चीज़ें हम यूजुअली करते हैं उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न मतलब अटैच होता है। लाइक यूजुअली इफ़ पीपल वांट टू हिट द जिम, दे वांट टू ट्रांसफॉर्म, और फिर वो यहाँ पर आते हैं, दे डोंट बी माइंडफुल अबाउट देयर ट्रांसफॉर्मेशन, दे जस्ट कम एंड गो। तो ज़रूरी नहीं है कि इफ़ यू आर वर्किंग आउट सो यू आर ऑलवेज गोइंग टू गेट रिजल्ट्स इन अ वे जिस तरीके से आपको मतलब लगता है यूजुअली कि इंस्टेंट रिजल्ट्स मिलने चाहिए। सिमिलर थिंग हैपेंस इन लाइफ एज वेल एंड वी कॉम्प्लिकेटेड मोर ऑफन। सो इफ़ वी टेक माइंडफुलनेस एंड सिंपलिसिटी, दे गो हैंड इन हैंड। माइंडफुलनेस मतलब बहुत लोगों को ये लगता है कि यार ये सारी तो ज्ञान की बातें हैं और ये वो, मतलब यू जस्ट हैव टू बी कॉन्शियस। आप वर्कआउट भी कर सकते हो, साथ में आप नॉर्मल अगर खाना भी खा रहे हो तो एटलीस्ट आप हेल्दी रहोगे, आप फिट रहोगे। So you need to focus on that. You have to be mindful what you are eating, what you are doing, what kind of people you are surrounded with, what type of things you want to do. And if there are things that you want to do, you are not doing, then you will end up doing the things that you don't want to do. And that actually takes you towards the path of existence only. To live in a way where you need to do 100 things, but you are just able to do 5 things, it's better that you do 6 to 7 things, but you do them. And that's how mindfulness is related to simplicity. So I'm done with my today's workout और it was a good session overall. अब इसके बाद का दिन थोड़ा सा hectic है. I have got to work and अभी एक मीटिंग भी है. अभी यहाँ से directly we are going to go towards the meeting. मीटिंग खत्म करेंगे, उसके बाद और काम करेंगे और उसके बाद आगे जैसे जैसे दिन प्रोग्रेस करता रहेगा and then we are going to talk about a lot of things. So I've got 2 back-to-back meetings now. One is 20 minutes away from where I am और दूसरी जो है उसके 30 मिनट बाद. And both of these clients, one is my like really old client or like about to be client you can say. So as I've told you earlier that mostly I work with early stage startups and traditional companies too. अभी देखते हैं इनके साथ क्या बात होती है क्या नहीं. इस व्लॉग में तो वैसे मुझे लगता नहीं है कि मैं आराम से बैठ के बात कर सकता हूँ. आई हैड टू मेक इट. आई हैव बीन कॉन्टेम्पलेटिंग थिंग्स फ्रॉम रियली लॉन्ग और बहुत ज़्यादा डिले हो चुका था ये बिकॉज आई वांटेड टू डू दिस फ्रॉम लाइक इट्स बिन अ वाइल. और बहुत लोगों के लिए मतलब ये चीज़ करना, उनकी कंटेंट स्ट्रैटेजीज बनाना और अपने कंटेंट पे कभी ना काम करना, इट वाज नॉट जस्ट वर्किंग आउट फॉर मी. आई जस्ट हैड दिस वन सिंपल आइडिया फॉर दिस वीडियो एज वेल कि जस्ट नो मैटर लाइक व्हाट काइंड ऑफ डे इट इज़ और जिस भी मतलब दिन मेरे को थोड़ा सा लाइट वीक मिलता है, यूजुअली आई डोंट हैव सच लाइट वीक्स, तो उस दिन मेरे को ये वीडियो बनानी थी. दिस वाज जस्ट सिंपल आइडिया. नो मैटर कि मैं कहाँ बैठा हूँ, क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा, गाड़ी में बैठ के बात करनी पड़ रही है या मैं एक्चुअली अपने ऑफिस में बैठा हूँ या लाइक wherever I am, it does not matter. I had to make it. I had to do these things because otherwise ये कभी होने वाला नहीं था. So I just kept it simple, right? People just don't realize this कि चीज़ें एक्चुअली में सिंपल है. फॉर एन एग्जाम्पल लाइक पीपल वेरी इजीली गेट ऑफेंडेड, people very easily get bothered about like what other person think about them. At first place nobody is thinking about anyone. I have realized this like after you know really long in my life. और लोगों को ये चीज़ लाइक सिंपली समझ लेनी चाहिए कि भाई कोई तुम्हारे बारे में नहीं सोच रहा है, कोई तुम्हारे बारे में इतनी परवाह नहीं करता है, ठीक है, जितना आप उस चीज़ को ओवरथिंक करके उन चीज़ों के बारे में खुद को परेशान करते हो. People are not handling their things in a simple way. They are making them overcomplicated. I've seen a lot of people these days when they are making decisions, let's say when they are making decisions to buy things or spending money as in general thing, all I know is that their decision making is getting influenced by a lot of people. It's just not influencers, but the people around you. The people around us had always been our influencers. They had always been influencing our consumer behavior. If somebody is making 1 lakh rupees like in a month and that person is less than 25 years of age, I am 110% damn sure that person is not spending the money in a conscious way.
where I have got to spend, I am going to spend it there. For example, जैसे let's suppose कि आप अपने कुछ दोस्त ऐसे हैं और you're going out with your family. I get it, some people are like that जो अपने ऊपर खर्चा नहीं करते. I think मैं भी like एक पॉइंट था कि जहाँ मैं मतलब अपने ऊपर unnecessary का खर्चा करता था, but now I am mindful about it. Some people are like that कि जो मतलब unnecessary का खर्चा करते हैं, but there are people जो समझदारी से खर्चा करते हैं. They are mindful on what they're spending. In general, people like J. Cole or people like richest of the richest people, we all are aware who are these people. They are very mindful where they are spending. Only poor people don't know how to spend money. It's not about just savings or investing in general. It's more about, making money and spending it at the right place and at the right time too. So if I'm going out with my friends, my family, obviously I'm not going to think it is like once in a month event or once in a 6 months event. And some people are like who are living away from their families, तो कभी कभी मिलते हैं यार. उसमें भी अब जब आप माइंडफुल नहीं रहते उस टाइम पर कि जब आपको खर्च नहीं करना चाहिए, तो फिर आपके पास उस टाइम पर पैसा नहीं बचता है जब आप एक्चुअली में उन लोगों के साथ होते हैं जहां पर आपको पैसा खर्च करना चाहिए. इट्स वेरी सिंपल. सो you've got to be mindful of the things that you're spending on as well. I see a lot of people getting into perception pitfalls. Man, you've got to stop doing this. How other people perceive you, how their perception is about you, and your perception about them. Stop doing this to yourself. क्योंकि जब भी कोई इंसान अपना कोई perception आपके लिए बना रहा है, nobody knows you to the core. मतलब 100% तो आपको कोई जानता ही नहीं है. You be with yourself like 24 hours in a day, 7 days a week, and you have been like, I'm 26 years old. तो मैं 26 साल से अपने आप के साथ हूँ. मुझे क्या आता है, क्या नहीं आता, मैं क्या करता हूँ, क्या नहीं करता हूँ, मुझे सब पता है अपने बारे में. I know like how my dark phase is. I know how my good phase. तो all in all मैं जानता हूँ. But there are certain people like whom I know in my life, और मैं अपने ही इसमें बेस्ट एग्जांपल दे सकता हूँ, जिनको एक पॉइंट पर ये लगता था कि भाई ये बंदा तो बहुत कूल है, ठीक है, and they were not right about it because it was just a perception of them that this person is wearing these type of sneakers, this person is good at like doing these many things, so he's cool. Then there were certain people who used to get jealous, ठीक है, उनकी भी गलती नहीं है. That is their perception. But yeah, when I was in my teenage, इन चीज़ों का फर्क पड़ता था, ठीक है, तब हम बच्चे होते हैं and we are not that conscious about ourselves. We don't even know what type of personality we are. Later on when you get older and you realize कि when you do your self assessment, that's when you realize कि that's not what you are. That's not how things are going to be in life in general. क्योंकि पॉइंट ये है कि आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम you don't even know what you will be doing, where you will be, who you are going to be with, like how your parents, क्योंकि after a point of time your parents also stop reacting to things, and that's when you should realize कि अब चीज़ें जो है वो आपके हाथ में हैं. और जब वो चीज़ें आपके हाथ में हो उससे पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको जानना. इन चीज़ों के बारे में अगर मतलब लोग बात करना चाहें, सबसे पहले तो खुद से बात करो यार, ठीक है, खुद से बात कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बहुत सारे सवालों के बहुत जवाब मिलते हैं. एंड देन रीडिंग करने से आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं आपके बारे में. डज नॉट मैटर व्हाट काइंड ऑफ ग्रेड यू हैव गॉटन इन योर कॉलेज और एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. अपने दिमाग से ये सच बता रहा हूँ, अभी के अभी निकाल दो कि भाई मैं तो पढ़ नहीं सकता, मेरा मन नहीं लगता. मेरा भी नहीं लगता था भाई. बट आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन आई स्टार्टेड रीडिंग एंड इट इम्पैक्टेड ऑन माई पर्सनैलिटी, it helped me in my personal growth per se, but it also helped me in my business, and that's when I realized my real potential. So stop getting into perception pitfalls. This is what I'm trying to say. So I'm just almost there. अभी इस मीटिंग को करके
फिर आगे की बात करते हैं. 2-3 चीज़ें और हैं that I wanted to talk about to you guys. Okay, so now I'm just done with my meeting and I'm done with my day. It's already a bit darker. So I'm just around the corner in the neighborhood only, and I'm with a friend right now. She's also helping me to shoot this video. So जिस चीज़ के बारे में मेरे को बात करनी है वो बहुत ही मतलब simplest of the simplest things है that it's written down in history as well. बहुत टाइम से हम ये चीज़ देखते हुए आ रहे हैं. हमारे पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स सब इन चीज़ों के बारे में बात करते हैं, which is cutting down on your unnecessary possessions and obligations, obviously. तो unnecessary possessions की मतलब हमें ज़रूरत नहीं है. अगर तुम्हारे पास अभी एक normal shoe है that you've got to wear, then you can wear that shoe. You don't need a $10,000 Jordan just because somebody else is having it. And if you wear it and put up a picture out there and you're going to get more likes, that validation is not going to take you anywhere in life. So trust me, whenever there is something which is unnecessary expense for you and that thing you don't need or it does not fulfill in your list of needs, wants and desires, and fuck desires, those are like matlab theek hai, everybody has their desires, but that is not something that you should be thinking about it consciously. What you need to focus more is, are your needs getting fulfilled? Or what in life, like whatever your possessions are, you need to make sure that they're taking you somewhere, they're upgrading your lifestyle, they are actually valuable in your life. I like habits, so I spend my money wisely. I am not going to spend in 1,000 things during the day. अगर मेरी जेब में पैसे हैं तो ये नहीं कि मैं ये भी ले लूँगा, मैं वो भी ले लूँगा. I am going to spend it wisely in something which is valuable, and there I'm never going to think. I'm never going to think twice with whom I am spending this money. And now cut to the next segment that I want to talk about is related to this channel. I don't know अभी ये चीज़ मतलब कहाँ जाने वाली है, कैसे क्या होने वाला है, कब क्या होने वाला है, मैं क्या वीडियोस बनाऊंगा, क्या नहीं बनाऊंगा. I just wanted to put my word out there. And putting my word out there means like what it really means for me कि मैं बस वीडियोस बनाऊँ और ये वीडियोस लोगों तक पहुँचे और लोग उसके बारे में एक्चुअली कुछ भी अगर कर सकते हैं. And if I am able to bring the difference, like at least in one or like for once or twice in anybody's life, it's not like कि 2-3 लोगों की लाइफ में, anybody's life, that is something that I really want to do, that is also valuable for me. So that's it for today. इससे ज़्यादा अभी कुछ है नहीं. इसके बाद मैं घर जाऊँगा, I'm gonna have my food and then I'm going to work on like the next day, how it's going to be. I'm going to plan it. After that I am going to make sure like obviously I'm going to read. I read daily and देखते हैं फिर कल के दिन. Usually I live a very boring lifestyle. I do similar things on a everyday basis and these things actually like bring a lot of joy into my life and bring a lot of value. So this is it, that's about it. Thank you so much for watching. If you have watched it till here, I'll see you guys in the next video. Signing off. भाई एक तो इंट्रो देना इतना मुश्किल हो रहा है ना सच में. आई गेस धीरे धीरे देखते हैं, पता नहीं शायद बेटर हो जाए यूट्यूब मेरे लिए. आई एम जस्ट ट्राइंग, आई एम जस्ट फाइंडिंग